Dear students, today we will discuss about potential energy. You already know about potential energy, but we will discuss here potential energy in detail. Potential energy is defined as the energy possessed by a body by virtue of its position or configuration. Position position means uh, position above the surface of earth or above the ground surface, and for configuration or shape it is based on the shape of the body or its configuration, just as when mangoes are hangs with their branches, then they have some potential energy. जो फ्रूट्स होते हैं, मैंगोज हैं, एप्पल्स हैं, वो अपने ब्रांचेस से जब अटैच होते हैं तो दे हैव सम पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज दे आर स्टेइंग एट सम हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. अगेन स्ट्रेच्ड बो, तो एरो एंड बो अरेंजमेंट, if we stretch the bow, then an extra amount of work has to be done by the external energy to stretch the bow, and this extra amount of work done by the external agency on the bow in stretching it is stored in the form of its potential energy. तो जो तीर और कमान है, तो उसको कमान को खींचने में जो एक्स्ट्रा एजेंसी के द्वारा वर्क डन होता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. ऐसे स्प्रिंग है, आजकल तो वो सेल ऑपरेटेड वॉचेज आ रही, अदरवाइज वो स्प्रिंग सिस्टम पर बेस्ड वॉचेज आती थी, तो उसमें स्प्रिंग लगी होती थी और जब हम उसको स्प्रिंग को टाइट करते थे तो जो उसकी बाइंडिंग्स होती थी दे बिकम्स क्लोजर टू ईच अदर, एंड इन इफ वी टाइट द स्प्रिंग देन वी डू सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क, and this extra amount of work is stored in the spring, and here it is termed as its potential energy. This with the help of this potential energy, that spring runs the watches after a long time. Types of potential energy mentioned here. Types of potential energy, it is of two types. One is termed as gravitational potential energy, another one is elastic potential energy. So very first, gravitational potential energy, the energy possessed by a body by virtue of its position is known as gravitational potential energy. इसको पहले भी जब पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन कर रहा था तो डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था. Second one is termed as elastic potential energy. The energy possessed by a body by virtue of its deformed shape. Deformed shape मतलब जैसे अभी स्ट्रेच बो या स्प्रिंग की जो कंडीशन है, चाहे उसको हम स्ट्रेच करें और चाहे कंप्रेस करें, चाहे इलोंगेट करें चाहे कंप्रेस करें, दोनों ही कंडीशन में उसकी शेप डिफॉर्म होती है, मतलब चेंज होती है, विरूपित होता है वो. तो वही जो डिफॉर्म्ड शेप के कारण जो एनर्जी होती है उस बॉडी में, that is named as elastic potential energy. The energy possessed by a body by virtue of its deformed shape is known as elastic potential energy. Its unit is just as unit of work, and here again it is joule in SI, and in CGS it is erg. And the dimensional formula of potential energy, both types of potential energy, mL square T minus 2. Now we will discuss gravitational potential energy in detail.
gravitational potential energy. This is a diagram showing that a body of mass m, a block of mass m is raised through height h above the ग्राउंड सरफेस से h हाइट ऊपर तक इस m मास के ब्लॉक को हमने रेज किया. देन वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स F अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. ये अप्लाइड फोर्स अपवर्ड है और ये mg ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड. तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स F अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय W equal to F dot H, force into displacement. But this applied force and this displacement, vertical displacement H, is in the same direction or in the same direction. Therefore, FH cos 0, and in this way W will be equal to FH. But this force F will be equal to the magnitude of gravitational force, and therefore it will be equal to mgh. This is equation 1. Now work done by the gravitational force on the block, work done by the gravitational force on the block raised to height h, it will be equal to W equal to Fg dot H. Here this height means H जो displacement है वो upward है, but Fg is downward, and in this way it will be equal to Fgh cos 180, and therefore W equal to minus mgh. This is the work done by the gravitational force, and this one is the work done by the external force. Work done by the gravitational force on the block when it is raised to certain height is known as gravitational potential energy, and therefore Ug equal to minus mgh. U stands for potential energy and G suffix G stands for gravitational. When the block falls from height h, जब ये h height से block fall करता है, then it is the case when the work done by the gravitational force, and this is the case when work is done on the gravitational force. Therefore here when block falls, then Ug becomes equal to mgh. फॉलिंग कंडीशन में वो वर्क डन ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और रेजिंग कंडीशन में वर्क डन ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स. इसलिए इसको हम कह सकते हैं लिफ्टिंग कंडीशन और इसको बोल सकते हैं फॉलिंग कंडीशन. दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ये उसके लिए डेरिवेशन है, उसके फार्मूले हैं जो आगे आपको काम आएंगे.